देखती आंखों सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम, नमस्कार और सत सत श्री श्री अकाल। अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अल्ताफ। मैं हूँ फाखरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो होप सो कि आपका ये दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल है ये, जिसे कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। बिल्कुल, इससे आज पहले हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट होते हैं और हाँ। कौन कौन से वो लोग अपने अपने घरों में क्या क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट हाँ, करते हैं कैसे दिवाली सेलिब्रेशन का। करते हैं। तो हम उसको डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक ऐसा ब्यूटीफुल सा इवेंट है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है दिवाली इंडिया फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो इसमें हम ये देखने वाले हैं। होप सो तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जल्दी से देख लेते वीडियो, बाकी सारा डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट बेस्ट वाली वीडियो शुरू कर। हाँ, ये नार है, ये ज्यादा, ये बड़ा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। Diwali is certainly one of the biggest, brightest and most important festivals of India. While Diwali is popularly known as the Festival of Lights, the most significant spiritual meaning behind it is the awareness of the inner light or the Atman. The celebration of Diwali as the victory of good over evil refers to the light of higher knowledge dispelling all ignorance. While the story behind Diwali and the manner of celebration of the festival differ greatly depending on the region, the essence of the festival remains the same: the celebration of life, its enjoyment and goodness. The word Diwali is derived from the Sanskrit term Deepavali, which translates to rows of lamps. Based on the Hindu lunar calendar, Diwali falls between October and November on an Amavasya or moonless night. Celebrated as the victory of good over evil, the festival is associated with the legend of the Hindu god Lord Ram's return to his kingdom Ayodhya after 14 years in exile. The demon king Ravan of Lanka had abducted Lord Ram's consort Sita only to invite his own death as a result. Lord Ram, along with his brother Lakshman and an army of monkeys, defeated and killed Ravan and returned to his kingdom with Sita. According to mythology, the people of Ayodhya lit up clay lamps known as diyas to welcome him on his return from exile. The biggest festival of India also gives rise to an abundance of Diwali melas or fairs and carnivals to support the massive shopping sprees associated with the festival. Girls and women dress up during the festival. They wear colorful clothing and new jewelry, and their hands are decorated with henna designs. Decorative items, garlands, diyas, and crackers are on the hot list of all the shoppers. This time of the year also marks the highest sale of traditional Indian sweets, as sweets are exchanged when families and friends come together to celebrate. Markets are adorned with colorful Diwali decorations. Small-time potters who sell clay diyas have their highest annual sales around this time. Local bazaars offer an array of designer clay diyas, earthen lamps and colorful lanterns. Women have a great time shopping and decking up for the festivities, along with gathering the items required for the rituals. Many tourists also visit markets to experience the festive rush during Diwali. Diwali also marks the end of the harvest season for farmers and the closing of the financial year for businessmen. Colorful idols of goddess Lakshmi and Lord Ganesha are seen everywhere in the markets. Hindus strongly believe that goddess Lakshmi, the goddess of wealth, visits their houses if they are kept clean and lit with diyas on this day. Vijay is a manager at a farmhouse and belongs to a typical Hindu household. He and his wife Rajbala, along with their children Varsha, Vaishali and Vishal, celebrate Diwali the traditional way. Diwali is a 5-day affair and kicks off with Dhanteras. Dhan means wealth, hence this day is considered auspicious for buying items related to prosperity like utensils or gold. Vijay and his family also plan to buy something in keeping with the customs of Dhanteras. Increasing inflation in India has made it a little difficult for everyone to buy gold. Vijay's family have decided to buy some utensils from one of the nearby shops.
It is a good day for the shopkeepers to make a lot of money. Vijay will have to bargain a lot to get the best deal. Different colorful varieties of fireworks are always associated with this festival. Vijay and Rajbala go to a shop to buy firecrackers for their children. Their youngest child Vishal is very excited as he checks out the crackers. The family returns after the shopping and rests at home as they have much to do the coming evening. An excited Vishal starts his Diwali celebration by bursting tiny crackers. Vijay buys new utensils that will be worshipped at night after they are offered to Goddess Lakshmi for blessings. It is believed that she will bestow the devotee with good luck, fortune and wealth. The day after Dhanteras is known as Narak Chaudas or Choti Diwali. In short, it is Diwali on a smaller scale with fewer rituals. Hindus get up before dawn, clean their houses, take a fragrant bath and dress up in festive clothes. Vijay and his family follow suit. They are decorating their house with much excitement to invite Goddess Lakshmi. The whole family rejoices on the occasion by singing aartis or religious hymns while they take part in the puja. The third day of the festival, also known as Lakshmi Puja, is the main Diwali celebration. The day is devoted to Goddess Lakshmi, goddess of wealth, and Lord Ganesh, the lord of auspicious beginnings and the remover of obstacles. The devotees worship them seeking prosperity and wealth. Vijay and his family are no exception. They do not want to annoy the deities and seek their favor. They get up early in the morning and start preparing for the big day. The daughters, Varsha and Vaishali, along with their mother Rajbala, start by creating a colorful rangoli in the doorway. Artistically sprinkling colored powder on the floor into an amazing pattern needs concentration and precision. The girls and their mother are experts at this. Vishal sits with his mother and curiously watches the rangoli motif being made. The purpose of the rangoli is to welcome guests and to encourage Goddess Lakshmi to come into the home. Once the rangoli is done, the women get dressed and light up diyas in the whole house. The house has already been decorated with colorful lanterns and sparkly lights which will be kept on all night. Dressed in their festive clothes, Rajbala and her daughters keep all the diyas on a large platter. They fill the diyas with oil and place the cotton wicks in them. Varsha and Vaishali place the lit diyas all over the house. Vishal and his friend also help his sisters by lighting candles and placing them in every room of the house so that each corner of the house seems to be welcoming the Goddess Lakshmi. Diwali falls on a moonless night, but the gleaming diyas and lights from the decorated houses in the neighborhood light up the darkness. Devotees throng temples to worship Goddess Lakshmi at night, but Vijay and Rajbala will perform the ritual in their own house. They need to set up the altar for the goddess first. Decorated with red cloth and yellow flowers, they place the idols of Goddess Lakshmi and Lord Ganesh at an auspicious spot in the house. The whole family gathers around it and Rajbala holds the Aarti Thali for the ritual. The Aarti Thali is a platter of offerings. Religious hymns or aartis are sung in praise of the deities while the prayers are being performed. The end of the Aarti marks the beginning of the noisy but colorful display of firecrackers. It is a lot of fun for children, and kids from the other communities also love to participate in this tradition. But one night of endless firecrackers causes a lot of air pollution, making it difficult to move about in the night, even to visit your friends and relatives. Diwali spells a business boom for the fireworks industry, since people spend millions of rupees just on crackers for this single day's celebration. Firecrackers are believed to be the announcement of the victory of good over evil, to dispel evil and to announce to the gods the joy of the people living on earth. Thus, firecrackers are set off from dusk throughout the night and sometimes even till dawn. While the firecrackers are going on, Rajbala is all set to prepare a feast for the day. Varsha and Vaishali help their mother in the kitchen. They plan to cook traditional puri, the Indian fried flatbread, and paneer or cottage cheese. After the meal is cooked, the family enjoys it at the table. Most Hindu families have a similar vegetarian fare for Diwali.
Govardhan Puja is the fourth day of the Diwali festival. In some parts of India, this day is also known as Annakut. Legend says that Lord Indra, the Hindu lord of rain and the king of gods, got angry with the people of the land of Gokul, the birthplace of Lord Krishna. To punish the villagers, the rain god poured out endless rain flooding through the village. However, Lord Krishna came to the rescue of the village and sheltered the villagers under Govardhan hill by lifting the entire hill onto his little finger, thereby protecting the villagers and their livestock. Since then, this day is celebrated to thank Lord Krishna. This day is also known as Padwa in some parts of the country, and people visit their friends and family with gifts and goodies on this day. Vijay's family has a tradition of celebrating this day. The women of the family and neighborhood make a cow dung hillock to perform the ritual of the day. The hillock is built symbolizing Govardhan Hill and then decorated with flowers and other elements. The menfolk then pay obeisance to this symbolic hillock by circling around it and singing religious songs. Vijay and Vishal join in the prayers. They also offer kheel, puffed rice and flowers to the hillock. The festival of Diwali concludes with a celebration called Bhai Dooj. This day is an important day for brothers and sisters. The name Bhai Dooj is divided into two parts. The first one, Bhai, stands for brother. Hindu women across India pray for their brothers' long lives on this day. The latter part, Dooj, is added as this day falls on the second day after Diwali. According to legend, Yam, the god of death, visited his sister Yamuna on this day. Yamuna greeted her brother with an aarti and vermilion mark of respect on his forehead known as tika. Yamuna celebrated the day by offering sweets to her brother and got gifts from him in return. The tradition since then is followed in all Hindu families. Sisters Varsha and Vaishali perform the ritual for their beloved brother Vishal. The celebration starts early in the morning and sisters perform puja for their brothers. They put a red vermilion tika on their brother's forehead. Brothers in return give gifts to their sisters as a token of their love. Vijay's children get up early in the morning and dress up. Vishal is seated for the ritual and his elder sister Varsha begins the ritual with a thali of offerings. She marks Vishal's forehead with vermilion paste and ties a holy thread on his hand. She gives him the auspicious offerings of coconut and sweets. Later, she happily demands a gift from Vishal and gets money instead. The younger sister Vaishali performs the same rituals. Vijay's sister also performs the rituals with him and the whole family customarily celebrates the day together. Bhai Dooj marks the end of the 5 days of Diwali celebrations. Diwali is known as the festival of lights, but with so many rituals and traditions, it can also be called a festival of sweets, gifts, fireworks and family. The most important message of Diwali is that of spreading happiness and sharing familial togetherness. Such festive celebrations impart a lot of values to the younger generations by helping them understand and enjoy traditions in a meaningful way. The festival of Diwali comes and goes every year, but the enthusiasm to celebrate it increases with every passing year. After all, it is synonymous with good time spent with family and loved ones and promises something memorable for every member of the family and community. Diwali night is a sight to behold in any part of the country, and the oneness of joyful spirits is apparent as people watch their troubles symbolically go up in flames and burst in an exhilarating display of fireworks. तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वीडियो थी। तो दिवाली जो कि मतलब खुशियाँ लेके आती है और खुशियों को बिल्कुल, ये एक 5 फैलाने। दिन का त्यौहार है। हाँ, 6 दिन का हाँ, मेरे 6 ख्याल दिन में। का त्यौहार, 5 या 6 दिन का हाँ। त्यौहार था। तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं हाँ। यानी कि हिंदू मज़हब के मुताबिक यानी कि हर दिन एक डिसाइड होता है। हाँ। तो उस हिसाब से ये 5-6 दिन की जो उनकी होती ना इबादत ही हम कहते हैं। हाँ, तो तो इसमें वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हाँ, इसमें जो कि उन्होंने जैसे बताया कि तो इसमें जो है, जो श्री राम जो थे वो सीता को लेके वापस आए थे और बुराई पे जो अच्छाई की जीत हुई थी। तो इसके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये जब अमावस्या की रात होती है मीन्स अक्टूबर में, तो तब ये सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इसमें मतलब कि हर तरफ खुशियों का मैसेज है, बिल्कुल, खुशियाँ ये फैलाने क्योंकि का। इसका नाम भी अगर हम बात के फेस्टिवल ऑफ हाँ। लाइट कहते हैं, तो इसके लिए ये नहीं कि ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए ही होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो बहुत ही मतलब हर हर जगह पे जो दिए और लाइट्स आपको लगी हुई हाँ, मिलेंगी। डिफरेंट और इसके अंदर अगर हम नज़र बनाएँ तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं, जो कि इस मज़हबी त्योहार का एक पार्ट हाँ, होता है। ऐसे ही है तो जिसमें जो कि डिफरेंट होती है। जैसे कि मतलब एक दिन होता है जिसमें कि कोई ना कोई चीज़ खरीदने को शुभ मानते हैं, कोई गोल्ड खरीद लें या कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल कोई भी ऐसे है। चीज़ जो कि शुभ मानी जाती है और जिससे कि मतलब ये कि वो काफ़ी शुभ रहता है, तो वो बाय करते हैं। और उसके बाद जो इसके है बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होते हैं दिए। हाँ, तो मिट्टी के दिए बने होते हैं, तो हाँ, उसके दिए और हाँ लाइट्स बिल्कुल, लाइट वगैरह घर जलाई को जाती है। डेकोरेशन किया जाता है डेकोरेशन के साथ साथ टोटली। उन दियों को एक प्लेस पे घर के इंटरेस्ट पे भी रखा हाँ, जाता है। पूरे इसके घर अलावा में ही बल्कि। हाँ, पूरे घर में। इसके अलावा वो जब फिर शाम के टाइम वो इबादत करते हैं, तो उस वक्त भी हाँ, वो आगे मतलब पूजा दियों के करते हुए। पूजा पाठ के लिए भी दियों का हाँ, यूज़ किया जाता है। ऐसे ही है। और इसमें मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे ईद पे होता है कि हम लोग शॉपिंग करते हैं और मेहंदी वगैरह लगवाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, और सेम ऐसे ही यहाँ पे मतलब होता है, शॉपिंग की जाती है और मतलब ईद के जैसे ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल। फेस्टिवल काफी इस बड़ा है। फेस्टिवल के अंदर जो फीमेल होती है स्पेशल, वो अपने लिए कलरफुल कपड़ों का बड़े कलेक्शन करती ब्यूटीफुल हैं। से हाँ, ड्रेसेस, बिल्कुल सही है कि घाघरा चोली खूबसूरत जैसे हो गया। उनकी हाँ। ये कलेक्शन होती है, कलरफुल कलेक्शन होती है। तो वो पहनते हैं और मतलब कि इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें मतलब गरबा खेला जाता है, डांडिया मतलब डांस वगैरह किया जाता है, और स्वीट्स दी जाती है एक दूसरे को, बिल्कुल, गिफ्ट चेंज इसके किए जाते हैं, अंदर एक्सचेंज, स्वीट जो इंडियन स्वीट होती है वो भी फैमिली के अंदर गिफ्ट चॉकलेट्स वगैरह। वगैरह और एक्सचेंज की हाँ, जाती है। और गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं फैमिलीज और एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो ये मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल एक है कि मतलब गिफ्ट्स एक्सचेंज करना। और ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स होती हैं और काफ़ी बिल्कुल, मतलब। उसके अंदर एक दूसरी चीज़ अगर हम एक और चीज़ ऐड करें, क्योंकि इस फेस्टिवल को मनाने के लिए जो लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं वो भी हाँ, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर इसकी सबसे अहम चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर यानी कि काफ़ी ज़्यादा रुपए यानी कि इस चीज़ के ऊपर लगते हैं, और वो है पटाखे। तो हाँ, वो लोग ये मतलब काफ़ी हाँ, ज़्यादा यानी कि ये ऐसा हो नहीं सकता हाँ, कि पटाखों के बगैर दिवाली दिवाली हो जाए, सेलिब्रेशन करें। मतलब वो तो कि वो खुशी का हाँ, खुशी के इजहार करते इज़हार हुए। करने के हाँ, लिए वो पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। हाँ, मुझे तो सही पूछो तो वो बाकी भी ठीक ही है, तो वो सबसे अच्छा है। कितना मज़ा आता है इधर से भी हाँ। पटाखा जा रहा हो। और हाँ। रंगोली जो इतनी ब्यूटीफुल सी हाँ, रंगोली बनाते तो हैं, मुझे बच्चों के बड़ा अच्छा साथ-साथ लगता है। बड़े लोग भी इस पटाखों में हाँ, एन्जॉय करते हैं ऐसे और ही है। सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ, तो और जो इतनी एक और चीज़ है जो कि सबसे अच्छी बात है कि जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने हाँ, ब्रदर को, वो अपने भाई भाई को दूज जो होता है ना, एक दिन होता है हाँ, भाई बिल्कुल दूज एक दिन का। होता है। तो तो उनकी पूजा मतलब वो उनको तिलक लगाती हैं। बिल्कुल और एक मेथड होता है, हाँ, प्रोसीजर होता है कि वो हाथ पे कुछ वो चीज़ राखी राखी वाखी टाइप वगैरह धागा धागा बांधती है। बांधती है। हाँ, तो उसके और तिलक अलावा तिलक लगाती है लगाने के बाद और फ्रूट्स वगैरह हाँ, देती है नहीं, उनको। वो जो सिस्टर होती है वो एक ट्रे देती है उसमें फ्रूट्स और हाँ, डिफरेंट होते नहीं, हैं, कलरफुल। फ्रूट भी हो सकते हैं या कोई और भी हाँ, चीज़ हो मतलब सकती है। फ्रूट ही देखा है हमने हाँ, इस वीडियो हमने तो में। फिलहाल फ्रूट देखा है। हाँ, तो वो फ्रूट देते हैं आगे से, रिटर्न जो गिफ्ट भाई देते हैं वो। रिटर्न गिफ्ट के तौर हाँ, पर कैश देता है। हाँ, और वो उनकी तो रक्षा के लिए बांधती हैं और प्रेयर करती हैं हाँ, उनकी ये एक मतलब अच्छा इवेंट है कि गुड अगर कोई लाइफ के भाई लिए। नाराज़ हो तो उस दिन तो उसने आना ही आना है। तो हाँ, भाई जो होते हैं इस तरह, वो सिस्टर नाराज़ होती हैं, भाई इनको हम्म, मनाने आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा फेस्टिवल, एक अच्छा हाँ, मैसेज होता है इस बात का। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत अमेजिंग इवेंट है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और ये मतलब एक ब्यूटीफुल सा इवेंट है, ब्यूटीफुल सा फेस्टिवल है जो कि खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आता है और खुशियों का मैसेज देता है हर तरफ, और बुराई पे जो है अच्छाई की जीत दिखाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये इवेंट, हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और बचपन से ही मतलब जैसे हम किसी ड्रामा और मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट करता है ये इवेंट। और इतने अच्छे अच्छे कपड़े जब पहनती हैं लड़कियां, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना, रंगोली बनाते हैं जब, वो बहुत ब्यूटीफुल हाँ, होती रंगोली है। वाला हाँ, पार्ट भी काफ़ी अच्छा था। हाँ,
यानी कि एक वो आर्ट टैलेंट ही है। हाँ, तो वो लोग बनाते हैं कि जो गेस्ट होते हैं उनके वेलकम के लिए, तो एक खुशी का इजहार करने के लिए। तो हमें तो ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? होप सो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक एक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल। तक वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।